Welcome to our channel AJ Pharmacy. So today we will discuss about the practical regarding the acid base titration in which we have to use the Kong sulfuric acid. Kong sulfuric acid as you can see in this container. As for indicator we use the methyl orange in solution that are prepared reagent. So and for the primary standard we again use the sodium carbonate as we had discussed earlier. So try to move regarding the calculation part. Now we will talk about the calculation part. We are talking about the preparation and the standardization of 0.1 normal H2SO4. So for this titration we will take a primary standard and the secondary standard calculation. For the primary standard we are taking sodium carbonate, and for the secondary standard we will take our sulfuric acid. So first we will prepare our primary standard. So it will be like preparation of 0.1 normal Na2CO3. In this titration, sodium carbonate is used as a primary standard. So we are preparing here first our primary standard, that it will be preparation of 0.1 normal Na2CO3. So the formula will apply here. It will like weight equal to NEV. You have already know about this. N represent normality, E represent here equivalent weight, and V represent what volume of water we are taking for dissolving our primary standard, that is our Na2CO3. So we are assuming and we are taking 0.1 normal. So it will be fill here 0.1 normal. Equivalent weight of Na2CO3 is 53 and the volume we are making here is 100 ml. So the final value will be 0.53 gram. So what we have to do, we will take 0.53 gram of Na2CO3 into the conical flask and we will add 100 ml of water, and constantly shaking we can prepare our primary standard. Now we will talk about the calculation part of preparation of our secondary standard. It will be like preparation of 0.1 normal H2SO4. So we are talking about preparation of 0.1 normal H2SO4. So H2SO4 are found in the liquid form. The formula will be different here. So the formula applied here is N1V1 equal to N2V2. Now the N1 here represent, N1 is the normality of laboratory supplied H2SO4. V1 what volume we have to taken for this making of a reagent or secondary standard. N2 represent what normality we are assuming here, that is we are talking about 0.1 normal, and the V2 what ml of water we are mixing our H2SO4. So the value will be put here, and the normality of laboratory supplied H2SO4 is 36.4. We can also calculate this value. If you want to know this value, how can we calculate this value, you can refer our videos in the theory part. We have already talk about this. Now the value I put here, that is 36.4. It will like V1 we have to calculate, N2 that will 0.1 normal, and V1 we are like V2 sorry, and we are making for 500 ml. Now after solving, it will like 50 divided by 36.4. So it will be like 1.37 ml. 1.37 ml. So what we have to do, we will take 1.37 ml by measuring cylinder, by using measuring cylinder into the beaker, and we will add 500 ml of water. By this way we can prepare our secondary standard, that is of 0.1 normal H2SO4. This is all about the calculation part. Now let's move on to the reagent preparation. So let us start our procedure by first process, that is for the weighing of the sodium carbonate. So first of all we had selected for the weighing machine. तो सबसे पहले हम लोग इसका काम क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपनी मशीन को टेयर कर दें, जैसे हम लोगों ने पहले हर प्रैक्टिकल में किया था. सो अब हम लोग सबसे पहले इसको टेयर कर लिए, फिर हम लोग अपने जो भी मटेरियल है उसे हम लोग अब वे करना शुरू करेंगे. हम लोग को जैसे कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है 0.53 ग्राम को, तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे हम लोग कितना वेट हुआ.
सो जैसा हम लोगों ने पहले देख रखा था, हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा 0.53 ग्राम होता है। सो हम लोगों ने वे कर लिया 0.53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो हम लोगों ने ये भी सैंपल प्रिपेयर करने की कोशिश की है, जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्क H2SO4 को 1.5 ml लिया, जैसा हमारा कैलकुलेशन था। सो अब हम लोग प्रोसेस करेंगे किस तरीके से इनकी सैंपल बनाई जाए। जैसे कि हम लोगों ने पहले सैंपल बना रखा था, जिसमें हम लोग कॉन्क H2SO4 लिए हैं। तो आइए सबसे पहली बात अब इसका सैंपल धीरे धीरे बनाते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम कॉन्क H2SO4 को लेते हैं या कोई भी एसिड को लेते हैं, तो सबसे पहली बात हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस को लेके चलना होता है। कि जैसे कि हमारा जो हैंड होना चाहिए जिसका हम लोग यूज करके सैंपल को ले रहे हैं, तो वो ग्लव्स में होना चाहिए। और जब कभी सैंपल को ऐड करें तो कोशिश कीजिए कि अपने ग्लास रॉड को स्लाइटली रखें और उसमें से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें कॉन्क H2SO4 को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप इसमें देख सकते हैं, डाल दिया, देखिए हो गया अच्छे तरीके से। अब इसे हम अच्छे तरीके से इसे क्लॉकवाइज रूप में इसे मिक्स कर देंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि सैंपल प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसके, जैसे कि हमारा कैलकुलेशन 500 ml में था, तब हम इसे 500 ml तक इसकी वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं। अब हमारा जो सैंपल है वो प्रिपेयर हो गया है कॉन्क H2SO4 का, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में हम लोग ने लिया है अप्रॉक्स 500 ml तक का। सो हमारा इसे हम लोग साइड में रख देते हैं। सो अब जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो कोई भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है उसे हम लोग बीकर में बनाते हैं, और जो भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक्यूरेट रिजल्ट भी आता है, और साथ ही साथ ये कैलिब्रेटेड है। तो हमें 100 ml का ही बनाना था, तो हमने 100 ml के लिए ले लिया। सभी से हम लोग इसे पोर करते हैं धीरे धीरे। इसे सबसे पहली बात उस फॉर्म में कर देते हैं जिसमें कि इस सैंपल को हम आराम से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका जो भी सैंपल है वो वेस्ट ना हो, वो सीधे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही आए, ताकि हमारा जो सैंपल है अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। सो अब हम लोग इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। पहले वाटर डालेंगे ताकि ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग कम्प्लीट इसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। इसे हम लोग इस तरीके से शेक करें। तरीके से फोल्ड भी करते रहें, ताकि आपका जो भी सैंपल अगर इसमें स्टिक भी करता है आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वो भी सैंपल कवर अप हो जाए। सो आप देख सकते हैं कि सैंपल बिल्कुल क्लियर हो गया है। कि क्लियरिटी शो करता है कि आपका सैंपल कितना प्योर है और आपने किस बेसिस पे अपने सैंपल को प्रिपेयर किया। सब धीरे धीरे हमें इसके वॉल्यूम मेकअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूमिक मेकअप हो गया और हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड भी प्रिपेयर हो गया, और साथ ही साथ सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी प्रिपेयर हो गया। सो अब दोनों चीज़ हम यहाँ सैंपल में रख देते हैं। फिर अब हम लोग टाइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। So we have prepared our primary standard and the secondary standard for this titration. Now we will take our secondary standard into the burette. So we have already filled our secondary standard, that is H2SO4, into the burette. Now we will take 10 ml of Na2CO3, that is our primary standard, into the conical flask for this titration. And now we will add our indicator, that is our methyl orange, and it will show yellow color in the basic medium. Show yellow colored basic medium.
sheet. Now what we will do, we will add H2SO4 from the butyrate and note down the reading. Now we will run down the H2SO4 from the butyrate, and we have to shake our conical flask constantly during the titration, and we have to analyze the sharp and color change, and we have calculate the end point here, the color change is here, and what we have found, yellow to red. Now we will write down the reading here. It is approx. Now it is, if you are seeing, it is 7.5. Now we will take the second reading. Now for the second reading, again we will take our primary standard, that is our NO2CO3. That is, we will take 10 ml of NO2CO3 again into the conical flask, and now we will add our indicator methyl orange. We will take our indicator methyl orange into the conical flask, and the color will shown here, it will be the yellow, because we have known the behavior of indicator. It will show yellow color into the basic medium. Now the end point will be the yellow to red. Now we will add H2SO4 from the butyrate, and we will write down the reading. So during the titration, we have to constantly shaking our conical flask, and we have to analyze the sharp color change. So we are adding, and as you can see, the color is shown here, and it is yellow to red. Now we will write down the reading, and it is 15.5 ml. Now we will take the third reading. For the third reading, we will again take our primary standard into the conical flask, that is our Na2CO3 of 10 ml, and we will add again our indicator methyl orange. Again it will show yellow color into the basic medium. We are adding our indicator, so it will show yellow color into the basic medium because Na2CO3 is the base. Now we will add acid from the butyrate, and it will show yellow to red again. Now we will add H2SO4 from the butyrate, and we have to constantly shake it. Again we are saying, this is very important to know, we have to constantly shaking our flask during the titration, and we have to analyze the start end point. And you can see the color is changed here, and this is yellow to red, and this indicate the end point of this titration. Now we have to take our reading, and it is 22.5. Now we will do our calculation part. Now we will do the calculation part. From the titration we get the value, and we will put into the observation table. We have divided our observation table into the three parts. The first one is the initial volume or the initial reading, final volume, final reading, and what volume of H2SO4 is consumed we will calculate by subtracting final minus initial. So these are the value we are getting, and we will do, if you talk about the volume of H2SO4 used, we will do the total here, and it will like 22.5, and it will be divided by 3 because we have taken 3 reading, so it will be the 7.5. So the 7.5 ml of H2SO4 is used here in this titration. Now we will apply the formula for calculating the normality of our secondary standard, that is our H2SO4. So the formula will be N1 V1 equal to N2 V2. N1 is the normality of our primary standard, that is our NO2CO3. Volume is the what volume of primary standard we have taken, that is our 10 ml we have taken of Na2CO3. N2 we have to calculate, and V2 what ml of H2SO4 is consumed in this titration. So when we modify the formula, it will be N2 equal to N1 V1 divided by V2. Now we will put the values, so it will 0.1 into 10 divided by 7.5. So the final value will be 0.1336
3 normal. So this is the normality of our secondary standard after the experimentation of the titration of H2SO4 by using sodium carbonate. So this is all about the titration of acid base titration of our secondary standard, that is H2SO4. So please like this video, share it with your friends and relatives, and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.